Hi guys, welcome back to our channel High Tech Group. My name is Raman Sharma and today I've brought a property which is in 300 square yards in Sushantlok 1, which is near to Hooda Metro Station and Golf Course Road. It's one of the amazing property available and this is the first time that I'm starting the video in the entrance. As you can see, जो MCB box है वो अंदर place कर रखा है, which is looking neat and clean. इधर आके अगर हम देखें, so this is the lift area. इधर proper LED fittings करके, which is looking really nice. So let's start the virtual tour of this property with the drawing area. So let me explain you the layout of this property. This is the drawing area and that is the dining area. Actually builder to builder depend होता है. कई drawing and dining को एक साथ combine कर देते हैं, कई उसका separate area बना देते हैं. जो drawing and dining को combine करते हैं उसमें सिर्फ एक advantage होता है कि आपका घर बहुत बड़ा दिखता है. अब जब सेपरेट करते हैं उसका एडवांटेज ये होता है कि सबको अपना एक अच्छे से स्पेस मिल जाता है. देयर इज अ सेपरेशन बिटवीन द ड्राइंग एंड द डाइनिंग एरिया. एज अ फ्लोरिंग यू विल बी गेटिंग इटालियन मार्बल एंड यू विल बी गेटिंग 7 डाइकिन एसीज विद द फ्लोर एंड यू विल बी गेटिंग हॉब, चिमनी, माइक्रोवेव एंड ओवन. अगर आप देखो सो वॉलपेपर हैज नॉट बीन यूज्ड इन दिस फ्लोर एंड पर्सनली आई फील कि वॉलपेपर की खास जरूरत भी नहीं होती. डिपेंड्स कि टेस्ट किस टाइप का है. इसमें अगर आप देखोगे एक बहुत ही क्लासी डिजाइन यूज कर रखा है. दिस इज द फर्स्ट टाइम जो मैं देख रहा हूँ कि एक पैटर्न के साथ एलईडी फिटिंग्स यूज कर रखी हैं. ये तो मेनली क्या होता है कि एलईडी जैसे राइट में लगा दी, जैसे दिस इज वेरी कॉमन, जैसे ये चीजें लाइट्स लगा दी हैं और इस साइड आपका एक पैटर्न बना दिया है. बट दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई एम सीइंग कि पैटर्न के साथ एलईडी लाइट्स हैं, विच इज लुकिंग रियली नाइस और फ्लोर से सेपरेट करती हैं छोटी छोटी चीजें. Let's start with the first room. So as I took exit from the first room, I entered into the dining area. Actually dining area बहुत बड़ा है. आप फॉर एग्जाम्पल इधर अगर डाइनिंग टेबल रख देते हो उसके बाद आपके पास काफ़ी स्पेस बचता है, तो आप इधर भी एक प्रॉपर छोटे सोफाज वगैरह एक सिटिंग एरिया इजीली बना सकते हो. ये एलईडी फिटिंग्स हैं. यू विल बी गेटिंग 2 एसीज इन द डाइनिंग एरिया ऑफ द सेम कंपनी. जस्ट ऑपोजिट द डाइनिंग एरिया दिस इज द किचन. द किचन इज टोटली मॉड्यूलर. On the right hand side, this is the space for the refrigerator. This is the space for the storage, and this is also the space for the storage. The builder has used shockers, so there is always soft close and soft open. And you will be getting hob, chimney, microwave oven with the floor. And this is the dishwashing area. So in a nutshell, जो kitchen है वो एकदम perfect size की, ना ज़्यादा बड़ी है ना ज़्यादा छोटी है. 300 square yards के हिसाब से बहुत अच्छी है. As we take exit from the dining area, this is the second room on the left hand side. This room is also very spacious. So the interior of the second room is different than the first one. On the left hand side, this is the storage space, and on the right hand side, this is the attached washroom of the second room. So now I'm entering into the third room. The third and the fourth room is connected with the back balcony. The interior of the third room is also different. In my personal opinion, I like these kinds of interiors. ये wooden block है proper. Actually, to be very honest, each and every room is spacious. This is the storage space, and there is a connected washroom of the third room. So let's take exit from the third room. As soon as I took exit from the third room, I entered into the back balcony. So the jal has been provided. This jal can be used for the security purpose, as well as with the help of the jal you get extra area. So in this area you can put your green carpet and put some plants and it will look really nice. So the taps has been provided by the builders. तो ये आपका एक washing area हो सकता है. And Actually my mic fell off. The builder has provided taps over here. तो ये आपका एक washing area हो सकता है. So जो AC के outer units है उसको back balcony में place कर रखा है because जो आगे है front balcony वो crowded ना हो. So now I have entered in the fourth room and this is also very spacious room. इसमें जो है interior बिल्कुल ही different है. इसमें proper LED fittings ऊपर provide कर रखे with wooden paneling. The size of the washroom is also good because this is the master bedroom. So for the fourth room, the builder has provided storage in the washroom area. ये भी बहुत क्लासी लग रही है. This is also soft close.
So guys, I hope you have loved the virtual tour of this property. If you like this property, then please contact us for the visit at 8929028000. In case if you're looking for some other kind of property in different location, different budget, different area, then also contact us at 8929028000. If you really like this video, then please like, share, comment and subscribe to the channel High Tech Group. This is Raman Sharma signing off. Bye, take care, love you.